first lockdown different from the second lockdown? You find any difference? I want your answer, spontaneous and very truthfully, not Okay, somebody else's answers. Okay, the first one was almost like an imposed lockdown, Okay. rather than it was required. Okay. But the second one was more so it was inevitable. Like we had to lock down because of the number of cases being increased. Okay. That is one thing I can say. Second thing, with respect to the first lockdown, in the second lockdown, we were more comfortable in arranging the necessities because it Okay. was all planned. Okay. In the first one, Yes, it was yes, little yes. difficult. Yeah, And, we stocked up last yeah. time. This time we didn't do that. This one we did. Because the shops were open anyway. Yeah. And another thing is most people are wearing masks and following the social distancing, which was not so common in the first one. People needed some time to get adjusted to this new normalcy. Yes. So that helped actually. This new normalcy is here to stay. It's going to be there according to me for another 2 years at least. You feel that way. Afterwards, we'll be back to normal. If we don't get another pandemic, yes. You're still first lockdown, second lock. Did you find any difference, sir? First lockdown it was a bit strict, and after that it has become it is not so strict. So post the first lockdown, when the corona cases started to drop down, I think people started to realize the actual meaning of life. We were all concerned about, okay, am I getting enough salary? Am I going to make it for the next few years? Am I going to get a promotion? But after the COVID, everything started to change. People started to realize that there's nothing bigger than the life itself. So that was like a blessing in a form of lockdown. I think, I think during the second lockdown, we started to feel the heat, at least especially in India, where we don't have much of infrastructures. Anybody and everybody whom I spoke to had lost somebody. So that was... Really? Yeah, so that was really, I would say, a gruesome experience for everybody. And I think that was the time when everybody started to call each other, no matter where they were. Boundaries and countries did not matter. So we all got together, spoke. Even that, 5 minutes of video call used to give a lot of inner satisfaction and that hope. So I think we should all learn something. And especially since we are in Lal Bagh, one important thing that we need to learn is during this corona, I felt that nature was blooming in itself. Okay. We started appreciating the flowers, the sky, because we were not constrained. You're becoming so poetic. I think you're going to burst into a song. Okay, Yeah, nice. So we started appreciating nature because we were not just concerned about our life. We were concerned about, okay, what is going on around? Are everybody vaccinated? What is the status? What are the hospitals running? How are the doctors doing? This is what the actual human nature should be. Appreciate everything what is going around and the nature. I think that should really bring the best out of us. What difference did you find in the first lockdown and the second lockdown? No big changes. It was actually equally the same. First lockdown, second lockdown. I was at home, so I didn't find much difference in that. Were you so busy with your online studies that you didn't peep from the window and take a look? Yeah, maybe that's the reason. But people were following first lockdown with much more, precaution, I can say. But in the second lockdown, I didn't find such, because there were few people who were careless about it. They didn't bother to stay home. But otherwise, I didn't find much difference from first and second. How was the first lockdown different from the second one? First lockdown was more stricter. In second lockdown, they have left free things. People are, even without helmets, they are wandering. Okay. Personally, how do you feel it? Okay, still there is we have to follow some caution. Okay. Because third wave is coming in. Now, what is the difference you found in first lockdown and second lockdown? Second lockdown was quite little flexible. First lockdown was like a shock we have never experienced before. But in second lockdown we were prepared because we have seen recently first lockdown, so it was quite very normal to gel with. But second lockdown was quite flexible. पहले लॉकडाउन में बहुत स्ट्रिक्टली लिया था उन्होंने. हाँ.
सेकंड लॉकडाउन में इतना स्ट्रिक्टली नहीं रहा क्योंकि हाँ। उसको लसीकरण भी हो गया था, हाँ वैक्सीन आपका हो गया वैक्सीनेशन हो वैक्सीन गया था। हमारा हो गया है, दोनों। एक रह गया, सिंगल ही हो गया। हाँ ओके। ये बेंगलोर में ही लिया, 4 महीना हो गया इधर आए हाँ तो उसमें कैसा सेकंड में जो बीच में कोई सिटी में जो लाट आया तो बहुत ही डेंजर था, उसमें बहुत सारे लोग चले गए अनमन में। लॉकडाउन जरूरी भी था और नहीं भी जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि लोगों की जो ये फैलना नहीं चाहिए ज्यादा। लॉकडाउन लगाने से क्या हो गया, लोगों के लॉकडाउन लगाने से क्या हो गया, लोग थोड़े आइसोलेट हो गए, इसके कारण उसका भी फैलाव कम हो गया, बहुत सारा उसका फायदा भी गिरा ना। लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन में क्या अंतर दिखा आपको? फर्स्ट लॉकडाउन में फुल तकलीफ थी, सेकेंड लॉकडाउन में जरा ये नहीं फर्स्ट लॉकडाउन में जरा हमने आया यहाँ से वहाँ से राशन ना, सेकेंड लॉकडाउन में तो कोई नहीं दिया। फर्स्ट लॉकडाउन में तो थोड़ा बहुत डर गए थे आदमी लोग। सेकेंड लॉकडाउन में मतलब केयरलेस हैं, बहुत केयरलेस, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है, आराम से घूम रहे थे कोई। लेकिन उसमें क्या है, एक एडवांटेज बोला तो वैक्सीनेशन आ गया था सेकेंड लॉकडाउन में। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, वैक्सीनेशन आ गया था, थोड़ा सबको थोड़ा डर थोड़ा धीरे धीरे गया। जो इससे क्या बोलते हैं वो उनका जो ये आता है ना, मतलब विल पावर थोड़ा स्ट्रांग होने लगा आदमियों का। ओके, आपको ऐसे लगा कि मेरा विल पावर स्ट्रांग हुआ। हाँ। फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन में अंतर क्या लगा आपको? सेकेंड लॉकडाउन वॉज मोर स्कैरी एक्चुअली। पीपल, आप हिंदी में ही रिपीट कर दीजिए जरा। सेकेंड लॉकडाउन ज्यादा डरावना था क्योंकि लोग ज्यादा मरे पहले से, और अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे, उनकी नेग्लिजेंस कर रहे हैं वापस, तो थर्ड वेव ज्यादा हो सकता है। लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन में फर्क क्या लगा आपको? पहले लॉकडाउन में लोगों को डर ज्यादा था, अब सेकेंड लॉकडाउन में लोगों को डर ज्यादा है, मगर लोगों को मालूम ये नहीं है कि बीमारी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसा और कुछ? बस केयरलेस हो गए लोग, हाँ, इसीलिए तो सेकंड स्टेप आया है, नहीं तो नहीं आता था। ऐसे आप सोचते हैं? मतलब जो भी तो फिर अभी हम केयरफुल रहेंगे तो थर्ड वाला नहीं आएगा? ऑटोमेटिक कम पड़ जाएगा। लोगों को मास्क लगाना वो जरूरी, नहीं लगाए तो उसका हेवी फाइन वसूल करना, तब ऑटोमेटिक लोग जाके मास्क लगाएंगे, और वो ये हमारे बचाव के लिए ही। और ये चीज, हाँ, डिस्टेंस भी मेंटेन करना, वो दोनों करना ही पड़ता है। लोग मास्क पहनते थे मगर मुंह पे लगाते नहीं, कोई ऊपर चढ़ा देते, कोई नीचे करते, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ, ऐसे पहनते हैं। सब लोग गलती करते हैं, भुगतना सबको पड़ता है। इसलिए ये दो चीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो हमारे को अच्छा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा है। लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन में आपको कुछ अंतर दिखा? वेरी ऑब्जेक्टिवली कोई अंतर नहीं था? हाँ सर, बहुत था। अंतर था ही नहीं। ये क्या हुआ है, पहले लॉकडाउन में लोग अपने आप बंधन में आ गए, समझ रहे थे, और उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा है, तो बिन धड़क, जैसे बोलते हैं ना कि हमने पशु को बांध दिया है, तो जैसे खोलेंगे केज तो सब भागते हैं। ये सब जब भागते हैं तो तब भी कुछ नहीं होता था। बाहर से लोग अंदर, अंदर से लोग बाहर काफी आने लगे। उन्होंने अपना हाइजीन मेंटेन नहीं किया। मेन हाइजीन है, हवा में दूषित थी मगर हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं, तो घर वापस लौट के मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कपड़े नहीं बदल रहा हूँ, तो ये बातें बढ़ गई थी। वो समझ में लोगों को नहीं आया, और मेडिकल लोगों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने फायदा उठाया, उसको चढ़ा के जितने पॉजिटिव केसेस कहे गए उसके आधे भी नहीं थे। कमाया किसने? जिसने पॉजिटिव रिपोर्ट कहा उसने कमाया, उसने डर फैलाया। मेरे बेटा भी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है, ओके, मैं इसको जानता हूँ और इस वायरस को भी मैं जानता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो वैक्सीनेशन हमको दिया गया है वो क्या है? वो कोविड वायरस ही तो है। हाँ। कोविड वायरस को आपको इंजेक्ट किया गया है कि लोहा लोहे को काटेगा अगर आगे। 2 बार दिया गया, 1 बार नहीं, 0.5 ml। तो ये सब खेल है, हम खेल को समझ नहीं पा रहे, और हम समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस समझ के दायरे के बाहर की बात है। इस समझ में नहीं आएगा। किसी को कोविड समझ में आया पक्का तो बता दे मुझे, कोविड क्या नाम है, क्या चीज है? बैक्टीरिया होना जरूरी है। हम आए हैं, वायरस है, बैक्टीरिया नहीं, हम वायरस। 1 मिनट, हम यहाँ क्यों आए हैं?
बैक्टीरिया बैक्टीरिया का रूप ही तो वायरस, उसका रूप मतलब छोटा रूप है, बड़ा वायरस रूप है। अलग चीज है सर, बैक्टीरिया मैं अलग समझ चीज रहा है। हूँ, मैं समझ रहा हूँ। वायरस कभी फैलता है? अच्छा, जब हम छोटे थे तो वायरल फीवर नहीं होता था, एक को हो जाता था, उसकी तौलिया की वजह से पिता को होता था, माता को होता था, ये तो होता पहले से है, कोई नई चीज नहीं है। हमने उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया है, हमने मेगा पिक्चर बना दिया, पिक्चर को मेगा पिक्चर बना के लोगों में डर फैलाया है। मैं हाथ जोड़ के आप सबको बोलता हूँ, डर मत फैलाओ। अगर डर है तो हाथ पकड़ो, जो डरा हुआ है उसको बोलो मत डरो। वो सही डॉक्टर वो है जो अपने आप को भी बचाएगा और पेशेंट को भी बचाएगा। ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸರೋಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸರ್ಕಾರದವರು ಇನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓ, ನಿಮ್ಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 14 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. 14 ತಿಂಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಸೇಮ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಅವಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬರೋದು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು? ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಲನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋರು, ಲಾಕ್ ಮಾಡೋರು, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇತ್ತು, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ತೆಗಿಯೋದು, ಕೆಲವರು ಮುಚ್ಚೋದು, ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಅರ್ಧ ತೆಗೀರಿ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿರಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ, ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬ ತೆಗೆದ್ರೆ 10 ಜನ ತೆಗೋರು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಾವುಗಳಾಯ್ತು, ಡೆತ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು, ಡೆತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸರ್ಕಾರದವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆಗೀರಿ, ಜನಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸಾವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 3rd ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಒಂಥರ ಜನರಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದವು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು 25ರಿಂದ 35-40 ವರ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಇದು ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಓದೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸತಿ. ಹೊಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಇದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿಗೆ 1 ವರ್ಷನೂ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನಿಸ್ತು?
ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಪ್ರಾಣನೂ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋವಿಡ್ದೇನು ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗ್ತು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಭಯ ಇಕ್ಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಭಯ. ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் செகண்ட் லாக்டவுன்ல உங்களுக்கு என்னென்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சது? ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுனில் புது அனுபவமாக இருந்தது. என்னுடைய வயசுக்கு 45 இயர்ஸில் புது அனுபவமாக, அவ்வளோ நாள் வீட்டில் நாங்கள் இருந்ததே கிடையாது. புது விதமான அனுபவமாக இருந்தது. ஏதோ அந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு கொரோனா வைரஸ் பரவலாம். இப்போ நாங்கள் நேர்லேயே அதை பார்த்தோம். உயிருக்கு காப்பாற்றுறதுக்காக தான் லாக்டவுன் கொடுத்தாங்க. அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது. ஒன்லி சேஃப்டி தான், சேஃப்டி பர்பஸ், பப்ளிக்கோட சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக தான் ரெண்டுமே நடந்தது. இல்லைன்னா அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும், அதனால பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். இந்த 2 லாக்டவுன்னால எனக்கும் எந்த பாதிப்பு ஏற்படல, எதுவும் நல்லதாக இருக்கும். And I want to draw your attention to just 2 things. मैं आप सब लोगों का ध्यान 2 चीज़ों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ. 1, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, आवश्यक अनावश्यक. Bad circumstances or adversity always come to teach us some good lesson. विपरीत परिस्थितियाँ और आपत्तियाँ हमेशा हमें कुछ अच्छा सबक सिखाने आती हैं. Like, see, the lockdown was about to start on March 23rd, 2019. I was totally unprepared, and on the last weekend on March 20th, I was running to the supermarket to buy things. What I saw was, people said all the shelves are empty, everything is gone. No, it was not like that. Rice gone, dal gone, tel gone. All the other things are just left untouched. लोग बोल रहे थे कि जल्दी भागो, सामान लेके आओ, सारे शेल्फ्स खाली हो रहे. ऐसे नहीं था. चावल नहीं था, दाल नहीं था, और हाँ टोमेटो ऑनियन ये सब चीज़ें गायब हो गई थी. बाकी सब चीज़ें स्नैक्स अननेसेसरी थिंग, प्लास्टिक आर्टिकल्स, ऑल दीज, टिश्यू पेपर. इन इंडिया वी डोंट यूज टिश्यू पेपर. ये सब वैसे की वैसी थी. सो वी शुड नॉट फॉरगेट दिस ब्यूटिफुल लेसन दैट दिस एडवर्सिटी थॉट अस. इस अच्छे सबक को, यानी नॉन एसेंशियल एसेंशियल, आवश्यक अनावश्यक, ये सबक हमें भूलना नहीं चाहिए. नाउ द सेकेंड पॉइंट, तो अब दूसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी वो ये है, नाउ विल देयर बी अ थर्ड वेव? थर्ड वेव होगा? यस, इट विल बी देयर. इफ वी लुक एट द ग्राफ, just search in Google India coronavirus stats graph, and the same way if you keep changing the countries, France, UK, you can see that, say suppose this is the x-axis and this is the y-axis. So this is the x-axis, this is the y-axis. Here this is the infection. This state, this indicates or denotes the infection. This is the date. Okay, if you see India's graph was like this. The first wave was so small, second one was this much. The peak here was about 80 to 90,000, the number of the infection. The peak here was 4 lakhs. The number of infection here was 4 lakhs. Just imagine. So this difference also was there. And if now this same thing, if you put in the search, Google search, regarding UK, France and other European countries, you will be surprised to see. See if you can get this, okay. Now here I have searched France
Okay. France का जो ग्राफ है, you can see here first wave, second wave, third wave. So they already had, first wave was so small, second wave in all countries was very big. Third wave, yeah, quite not so big, but in UK the third wave was still larger. I think you can just search it on Google. So other countries have already had third wave and fourth wave. So दूसरे कंट्रीज में हम रेफर करके देख सकते हैं कि उनका थर्ड वेव और फोर्थ वेव चल रहा आ रहा है उनका. So that means that we are going to have a third wave, fourth wave, then fifth wave, then sixth wave, then seventh wave. Yeah, don't look at me so unforgivingly, because since I'm saying that even 7 times it may come, why it may come even 7 times 77? We may have many waves and many lockdowns will be there. This is because this flu is same like the common cold. Common cold भी ऐसा ही था, same type of pandemic. So पूरे world population 8 billion people must get it. Then only the waves will continue as very small ripples. Then it will just continue and continue. Cold which began as a pandemic, we finally came to know that it is seasonal. So season affects it. Now what affects COVID we do not know. अब COVID किस वजह से आता है? सीजन के चेंज से आता है. कोल्ड तो सीजन की वजह से आ रहा था. Now COVID, what really triggers the wave? We don't know. So studies on, we'll come to know soon whether it is really large gatherings alone that cause it or what exactly. But till the 8 billion people either get vaccinated and get infected or just get infected, only then these waves, the very lethal high spike waves, जो इतने ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, उस टाइप का वेव तभी ख़त्म होगा जब सब लोग एक बार कम से कम इन्फेक्टेड हो जाएंगे और बार बार इन्फेक्ट होने का चांस है. यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट दैट oh then there will be more lockdowns. See, in first lockdown only medicals and grocery were open. In the second lockdown eateries and wine was shops were open. है ना? पहले लॉकडाउन में केवल मेडिकल्स और ग्रोसरीज ओपन थे. फिर सेकेंड लॉकडाउन में वाइन, शराब की दुकानों को अलाउ कर दिया, ईटरीज को अलाउ कर दिया, रेस्टोरेंट वालों को अलाउ कर दिया. सो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू लॉकडाउन्स more shops may be open, and it could quite be possible that all the shops would be open and people may be asked only to restrict their movements and have a new different set of behavior when they go out. That is COVID appropriate behavior. And yeah, we will be able to adapt to it very soon. We will become used to those habits. Those will become the norms. We will have to maintain COVID appropriate behavior. Yeah, so lockdowns might be there, a lot of lockdowns might be there, but many countries are lifting these things, and because they are following COVID appropriate behavior in spite of the spike in infection ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी जो है लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी नॉर्मल चले. तो कई इंस्टीट्यूशंस ओपन है, कई इंडस्ट्रीज ओपन है. धीरे धीरे चल के लॉकडाउन रहेगा पर सभी चीज़ ओपन रहेगा. बट वी विल हैव वन restriction to move, but I think we will find a way out that how these things will happen. So waves will be there, the third wave might come. Yeah, one more wonderful thing can happen. The SARS and the MERS, they disappeared suddenly. Spanish flu also disappeared suddenly. It can very well happen that we may not have a third wave or a fourth wave, and suddenly we may see that this has disappeared. This too can happen. Please do not look at me so unforgivingly that look at her, she is saying third wave also will come, fourth wave also will come, fifth wave also will come. Okay. क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा, सेवेंथ वेव भी आएगा, इससे आप गुस्सा ना हो. It is better to be prepared. If you are prepared that okay, such a thing might happen,
then it is, you will be able to handle it better. If something descends on you unexpected, then emotions will go high and low. So that will bring in too much of emotional drainage of strength. So it is, no, there'll be a terrible drainage of your energy if there are large emotional upheavals. आपके भावनाएं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगी तो आप थकेंगे, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे. बट इफ़ यू नो दैट ओके दिस, ये थर्ड वेव भी आने वाला, फोर्थ वेव भी आने वाला, तो देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड योर इमोशंस विल बी स्टेबल एंड यू विल नॉट गेट टायर्ड. ओके, सो यू जस्ट थिंक हम वाकई में बहुत थकने वाले हैं. It is going to be so tiresome third wave, fourth wave, but there will be an automatic shift. We learn to adjust to it, we learn to live with it.